In Pakistan, 1,000 children below the age of 5 die every day. But this is preventable. The biggest killer is pneumonia. Child gets pneumonia and the mother is told that the local hospital doesn't have facilities, so you need to take your child to a major urban center. That urban center is 9 hours away and they would need close to $100 for travel logistics. You lose valuable time in that process because treatment delayed is treatment denied. This was our call to action. A fighting chance. It is all they can hope for when the floods came. Pakistan has suffered 5 major climate change disasters in the last 15 years. Millions of people were displaced. Majority are children. They brought both Benazir and Wazira here to Civil Hospital. And doctors right away knew that these children were sick. With such limited resources, there was only so much they could do. Climate change is making this more urgent than ever before. So we need to develop our systems now. Research shows that 50% of country's child mortality can be reduced if you fix the emergency rooms. The main problem with the older emergency rooms are they are not purposely built. They have no proper triaging system. They have overcrowding of the patients, lack of human resources, lack of medicine. And because of that, patients, especially children, suffer. आपकी बच्ची पहले भी कमज़ोर है, बरीरा लंबा सांस लेते रहो बेटा। जब भी एक क्रिटिकली इल बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट में हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हो, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ हो, शॉक के साथ हो, तो जो उसका जो पहला घंटा होता है, जब वो प्रेजेंटेशन का जो पहला घंटा होता है, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। ये एक ऐसा गोल्डन चांस होता है हमारे पास जिसमें हम अर्ली ट्रियाज करके, अर्ली रिकग्निशन करके और टाइमली इंटरवीन करके उस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। डॉक्टर वाहिदा आपके साथ 1-2 बच्चों का बातचीत करनी है। Child mortality is very complex. You need to do many things. But if you are able to improve the emergency care, the child will be saved that day. And since consultants are not going to move to rural areas, let's take their consultation to rural areas. You can do that with telemedicine, reaching places that used to be impossible to reach. So the solution was improve the emergency rooms and developed a telemedicine model. We said we want to work with the people who are the poorest and the sickest. That's public sector or government hospitals. So we started in Karachi and we adopted its emergency room. We signed an MOU with the government. The first step was improving the infrastructure. The ChildLife Foundation has taken the building that was not in a very good state. They converted that building into a state-of-the-art emergency room. चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का जो मॉडल है, उसमें हमारे पास जो रिससिटेशन रूम है, वो हमारे पास बहुत वेल इक्विप्ड है। उसमें हमारे पास वार्मर्स हैं, कार्डियक मॉनिटर्स हैं, डिफिब्रिलेटर है। अभी हम इसको ड्रिप लगाएंगे, इसकी एंटीबायोटिक्स करेंगे, जब बुखार टूटेगा फिर आपकी छुट्टी करेंगे। लेकिन तो जब तक ये चीज़ें हमारे पास इन हैंड नहीं होती, बच्चे की ज़िंदगी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बेटे को बुखार था, फिर एकदम उसको झटके लग रहे थे, उसके मुंह से झाग भी आ रहा था। जब भी डॉक्टर साहब फ़ौरन आ रहे थे एक आवाज़ पे, तो इधर आए थे, फिर उन्होंने चेक किया अच्छी तरह, पूरी कोशिश उन्होंने दिलो जान लगा दी कि बच्चे को देखने में, सारा फोकस इसी बच्चे पे दिया था, हसन पे। दिल कह रहा बैलेंस नहीं था अपनी जगह पे, वो हमने किया है। The second step is adding human resources and medical supplies. So no parent is told, your child is going to die, bring this medicine from outside. चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में हमारे पास जितनी भी मेडिकेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारे पास ऑलमोस्ट 300 आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि पीड्स की तमाम इमरजेंसी मेडिसिन्स को कवर करती है। The third step is the most important one, which is developing systems, monitoring them, and making sure you follow the best practices. चले अगर ये जब ये फिट हो जाए तो फिर इसको आप कोऑर्डिनेट करवा दीजिएगा
उनके साथ hematology oncology वालों को और अगर A building is not going to save patients. The service inside makes the big difference. The streamlined ER management has reduced the waiting times, improved the accuracy of the triage system, and early identification of the critical care cases. So now they receive the timely care, which reduces the mortality rate. Developing electronic medical records, a first for a public sector hospital. Because without that, you cannot measure, and what you cannot measure, you cannot manage. And that's accountability. So the model is improve the infrastructure, add human and medical resources, and develop systems, which is accountability, which gives feedback to people on how they are working. The vision we have is that no child should be more than 30 minutes away from world-class quality care, which is free of charge and available 24/7. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमशा है। मैं टेलीमेडिसिन 1 से बात कर रही हूँ। किससे बात हो रही है मेरी? So we developed a telemedicine model वाइटल स्कैन से। ठीक है। that since consultants are not going to move to rural areas, let's take their consultation to rural areas. The nurse shares the vitals of that child. और हाई ग्रेड हो रहा है या लो ग्रेड? लो ग्रेड हो रहा है। कंटिन्यूस है? After discussing with the local doctor, with the expert doctor sitting in a major city, इसको हम IV एंटीबायोटिक्स IV फ्लूइड्स पे लेंगे, ऑक्सीजन अटैच करेंगे इसको 2 लीटर नेजल ब्रोंक से। this is also on-the-job coaching for the local doctor. And the local doctor makes the final decision. Using telemedicine, we are now in 300 plus hospitals, available to 85% of Pakistani children. The most innovative part of ChildLife is working with the government, not only for an alignment, permission to use the government infrastructure, but also financing from the government. And the real impact is in the child mortality. From a 12% mortality in ERs, it has gone down to 1.2%. That's a 10 times difference. इसे चारों तरफ होने चाहिए कि बच्चे को देखने के लिए नहीं हो सकता, वह फिर कोई इंसान इधर उधर कर सकता है। माँ को टेंशन नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड लाइफ में से पहले मैंने पहले भी ये जहाँ इमरजेंसी जो थी वो देखी थी, की तैयारी करी थी। एक गैस्पिंग बच्चा मैंने देखा, डिहाइड्रेटेड था, एसिडोटिक था, एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन टू डाई। नॉट इवन ऑक्सीजन भी नहीं लगी हुई थी। जब आज मेरे पास आता है तो मैं उसको बचा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इंट्यूबेशन का सामान है, मेरे पास एसिडोसिस इम्प्रूव करने की दवाइयाँ हैं, मेरे पास फ्लूइड बोलसिस है, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छी जेल्ड और अच्छी ट्रेन टीम है, तो मैं उस बच्चे को बचा लेती हूँ। तो बहुत बड़ा चेंज है। When you save a child, you're giving them 70 years of life. And these children are pure, they are innocent. We dream of a world where there will be zero preventable child deaths.